So the answer mentions at paragraph number 3 in subclause C about the action that has been taken for reducing the cost of the batteries. Batteries are the most important component in this electric vehicle ecosystem that we are talking about. But another important thing related to batteries is how quickly can it be charged. And therefore, it requires a lot of research and development activities. Currently, as I see, the emphasis is on importing technology from outside as far as green technology is concerned. What are we doing indigenously for promoting green technology research and development to reduce the time for charging batteries? Thank you. Sir, actually I never understand, there is a lot of discussion in the country. Some people are talking about shortage of lithium. Some people are talking about the shortage of charging station. Sir, in my own department, NHI, already I am making 650 charging stations. Every 40 kilometer roadside amenity is there. Now the scooter and car, they are manufactured in a way there is a small charger. You can use car whole day. At the night you just can plug it. You will get the charging tomorrow morning if it will no problem there, sir. In Nagpur, in one of the auditorium, Mr. Praful Patel knows that, Suresh Bhatt Sabhagruha, under 700 car parking was there. Total car parking, the electric charging is available. So the day will come that every office, parliament, everywhere, sir, even you have to make the arrangement for this, and the day will come within a year that everywhere there will be arrangement. And as far as this battery cost, it's an important challenge. Now presently lithium ion is a big challenge. We don't have lithium ion. 81% of the battery we are manufacturing in India. Now in the world lithium is available. Government is trying, our mining ministry is trying to acquire some mines and they are in the process. But budgetary outlay of rupees 18,100, that is for particularly for this PLI scheme. The advanced chemistry cell battery storage has been extended to promote fresh investment in indigenous supply chain for battery manufacturing in the country. The budget is 18,100 crore. Then status a total of 10 bids with the capacity of 130 gigawatt per hour has been received, which is 2.6 times the manufacturing capacity to be awarded, that is 15 GWH. So everywhere I feel that there will be no shortage, and it's a really interesting thing. The Indian scientists, we have the highest trained engineering intelligent manpower, young manpower in India. Our startup, our engineers are very, very competent. And they are now in the research and the innovation, entrepreneurship, science, technology, research, skilled and successful practices. We name it as knowledge and conversion of knowledge into wealth is the future. And I am really confident the way in which the young talented engineering are doing, sir, excellent job. Sir, even the electrolyzer are manufacturing in Bangalore from our engineers, sir, successfully. So I am fully confident within 2 and 3 years, the total scenario will change. Otherwise, sir, presently the import of crude oil is 8 lakh crore. By the way in which the automobile is now increasing, it will come 25 lakh crore. So this is the time for all of us, for the economic interest, for the country interest, and for the ecology and environment interest, that we have to shift over to alternative fuel, electricity, ethanol, methanol, biodiesel, bio-CNG and electricity and green hydrogen. Thank you. And we are on the path, sir. Thank you. Minister's reply reveals that in the year 2021, electric vehicles accounted for 1.4% of all vehicle registrations in the country. I would like to ask the Honorable Minister a very specific question. Many countries in the world have announced a phase out of petrol and diesel engines by the year 2035 or by the year 2040. I'd like to ask the Honorable Minister whether the Government of India has a specific roadmap. Say by the year 2035, X percent, maybe 50% of all vehicles will be electric vehicles. By the year 2045, we will phase out all petrol and diesel vehicles. Because unless we have a roadmap, we are not going to be giving incentives to the private car manufacturers to phase out petrol and diesel engines. So I would request the Honorable Minister to share with us, if not today, later, what is the roadmap for the next 10 to 15 years for a phase out of petrol and diesel engines? Thank you. As far as the percentage is concerned, already from last many years we have diesel and petrol vehicles. Even now we are increasing vehicle on CNG. We are now, for transport sector, the logistic cost is very high.
In the China, the logistic cost is 10%. European country and USA, it is coming up to 12%, and India, it coming to 16 to 17%. Now the LNG is the fuel for the future. The one truck you convert into LNG, the cost is 8 lakh rupees, and you will get your money back within 290 days. Sir, we are trying for that, but one thing is, he is absolutely correct, that presently, because of the previous record, we have a lot of diesel and petrol vehicles. And that is the reason, sir, our government has already launched scrapping policy. And 4 new vehicle, whatever the pollution they are giving, as compared with the old vehicle, one vehicle is creating that much pollution. So 100% is correct. But my request to him, that you should not make it to be any fixed program for that or anything about 20, 30 or anything. I only ask you a simple question. Presently, the car cost is 15 lakh rupees, and you will get the car with 15 lakh rupees, and your petrol expenditure is 15,000, and electric expenditure is only 2,000. Then no pollution, no sound. Then I don't need to market for that. Now it is a natural choice of the people. I am telling you, you go into see the BMW SUV model, 48% GST in place of 5%, the cost is reasonable. Go to Mercedes electricity car, SUV. You can see a Volvo. Even all the cars are so excellent, so beautiful. I am always making the research for that, and I feel that it will be a natural choice of the people, because the market, already the economic viability is there, comforts are there, and it is 100%, it will be the choice of the people. So I don't want to commit anything about the years, because then media starts a lot of contradictions and making other things, so it will create more problem. But only I will assure you that within 3 years, total game will be changed, and now day by day, the sale of petrol and diesel vehicle will be reduced, and alternative fuel and electric vehicle sale will be increased, and after 5 years, total scenario will be changed. Thank you for allowing me to take up an issue which is of paramount importance, and that is the rising danger of social media being abused to hack our democracy. Global companies like Facebook and Twitter are used increasingly to shape political narratives by leaders, political parties, and their proxies. It has repeatedly come to public notice that global social media companies are not providing a level playing field to all political parties. Last year, for instance, the Wall Street Journal reported how Facebook's own hate speech rules are being bent to favor politicians of the ruling party. Recently, Al Jazeera and the Reporters Collective have demonstrated how a toxic ecosystem of proxy advertiser posing as news media is flourishing on Facebook, bypassing election laws of our nation, breaking Facebook's own rules, and completely suppressing the voice of those who are speaking up against the government. Sir, the blatant manner in which social harmony is being disturbed by Facebook with the connivance of the ruling establishment is dangerous for our democracy. Young and old minds alike are being filled with hate through emotionally charged disinformation and proxy advertising. Companies like Facebook are aware of this and are profiting from it. These reports show a growing nexus between big corporations, the ruling establishment, आपकी डिमांड क्या है? आपकी डिमांड क्या है? and global social media giants like Facebook. Sir, through you, I urge the government to put an end. Sir, through you, I urge the government to put an end to the systematic influence and interference of Facebook and other social media giants in the electoral politics of the world
largest democracy. This is beyond partisan politics. Okay. We need to protect our democracy and social harmony regardless of who is in power. Thank you. सब ये जो वन नेशन वन राशन कार्ड बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें जो गांव देहात के बहुत एंटीरियर तक जहां बायोमेट्रिकल सिस्टम और जो राशन कार्ड बनने की जो प्रणाली है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है। और जो अभी जवाब में मंत्री जी ने कहा कि इन्होंने स्टेटों को आदेश नहीं दिए हैं और बहुत दिक्कतें आ रही हैं नया राशन कार्ड बनने में, तो जो क्या कोई सरकार ने ऐसी प्रक्रिया अपनाई है जो गांव स्तर पर जाकर के उनको मॉनिटर करके और नया राशन कार्ड बनवाने में कोई दिक्कत ना आए, जिससे उनको सुविधा के बजाय असुविधा हो रही है? वैसे मैं इसका समर्थन करता हूं नई वाली का कि ये अच्छी बात थी, पर इसको मंत्री जी प्लीज बताएं। माननीय अध्यक्ष जी, कई वर्षों से ये पाया गया कि हमारे कई प्रवासी मजदूर जो अन्य अन्य क्षेत्र में जाके काम करते हैं वो वंचित रहते थे कि अनाज जो बहुत ही सस्ती कीमतों पे 2 रुपए 3 रुपए में केंद्र सरकार पूरे अपने खर्चे पे लोगों को 80 करोड़ लोगों को देश में देती है नेशनल फूड सिक्योरिटी के प्रोग्राम के अंतर्गत, वो गांव में ही मिलता था, शहरों में अलग जगह काम करने वाले लोग नहीं ले पाते थे। इसीलिए ये कोशिश की गई कि टेक्नोलॉजी का माध्यम इस्तेमाल करके पूरे व्यवस्था को सुधारा जाए। इसके कारण वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम लागू की गई और इसको लागू करते हुए हर एक पहलू का ध्यान दिया गया कि भाई जिस फेयर प्राइस शॉप पे अनाज मिलता है वहां पे डिजिटल टेक्नोलॉजी है कि नहीं, कनेक्टिविटी है कि नहीं, कनेक्टिविटी होने पर ही फेयर प्राइस शॉप पे ये सिस्टम लागू किया जाता है। और आज 5 लाख के करीब दुकानें हैं देश भर में, सभी में ये लागू कर दिया गया है। आसाम में क्योंकि पहले आधार कार्ड देने में विलंब हुआ था कुछ कोर्ट के ऑर्डर्स के कारण, अब वहां भी तेजी से प्रक्रिया चल रही है कि आधार कार्ड से लिंक करके वन नेशन वन राशन कार्ड आज जो 97% बेनिफिशियरीज है, यानी लगभग 80 करोड़ में 77 करोड़ देशवासियों को आज किधर भी देश में जाए उनको तो राशन कार्ड भी कैरी करने की जरूरत नहीं, ये भी जरूरत है कि राशन कार्ड लेके जाए, वो जाके अपना नाम दे या नाम भी दे नहीं, अपना आधार कार्ड का नंबर दे या राशन कार्ड का नंबर जो उन्हें याद है वो दे और अपना बायोमेट्रिक अंगूठा लगाए और उनको जितना राशन मिल सकता है वो पूरा ले सकते हैं, थोड़ा यहाँ थोड़ा गांव में ले सकते हैं। अलग अलग तरीके से हमने सुविधाजनक व्यवस्था बनाई है, राज्य सरकारों को भी इसमें पूरी तरीके से जोड़ा है। अगर कोई स्पेसिफिक गांव में या किधर कोई दिक्कत आती है तो हमें जरूर सूचित करिए, हम राज्य सरकार से भी चर्चा करेंगे, चाहिए तो केंद्र की टीम भी जाएगी। पर यह एक बड़ा सफल प्रयोग रहा जिससे कोविड की महामारी के बीच में भी पूरे देश में एक एनएफएसए का अनाज मिला, 5 किलो अधिक 19 महीने तक हर 80 करोड़ लोगों को हर महीने 19 महीने तक 5 किलो अधिक अनाज मिला। दोनों का भी हमने ये केयर ली कि दोनों की बायोमेट्रिक अलग अलग समय पे हो, ऐसा नहीं कि एक बायोमेट्रिक में आदमी आधा अनाज दे आधा रह जाए। हमने कहा एक बार जाओगे तो आपको एक मिलेगा, दूसरी बार अलग बायोमेट्रिक करके आपको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में मुफ्त में, जिसके लिए केंद्र सरकार ने 3 लाख करोड़ लगभग रुपए 19 महीने तक लोगों तक पहुंचाए। और आज हमें गर्व होना चाहिए पूरे सदन को, ये हम सबके लिए गर्व की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लागू की गई उसके कारण आज देश में एक भी चूल्हा ऐसा नहीं है, एक भी कोई उदाहरण आपको किधर नहीं मिलेगा जिसपे किसी का चूल्हा ना जला हो, किसके घर में भूखमरी हुई हो। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। सर ये तो मैंने भी माना है कि अच्छी प्रणाली है, तो इसको इतनी डिटेल की बेसिकली लंबे की जरूरत थी नहीं। मेरा सीधा प्रश्न है कि उनमें नीचे तक क्या पहुंचाने के लिए कोई सुविधा है? अच्छा सब चलो जवाब दे दिया, मैं उसको मान लिया। अब सीधी बात है कि कोरोना कार्यकाल के समय
एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश देशों में जितने भी गरीब और मजदूर लोग गए थे, जिनके राशन कार्ड बदल गए थे, क्या कोई सरकार ने ऐसी व्यवस्था करी है कि उनको मॉनिटर करके, जो बहुत परेशान है, रोजी रोटी नहीं है, उनके लिए क्या सरकार की कोई योजना है मॉनिटरिंग की, ताकि उनको न्याय मिल सके? मुझे लगता है माननीय अध्यक्ष जी, मेरे मित्र सांसद भाई टीवी बहुत देखते हैं, बड़ी सीधी बात करते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आज राशन कार्ड आपको बदलने की आवश्यकता ही हमने खत्म कर दी। हमने तो इतनी सरल प्रणाली बना ली है कि आप राशन कार्ड आपके गांव में ही रहेगा। आप शहर जाते हो या किधर और काम करने जाते हो तो आपको तो अपना सिर्फ आधार नंबर याद रखना है, और जो आज मुझे लगता है हम सभी को, देशवासियों को अपना आधार नंबर याद रहने लग गया। तो इतनी सरल प्रणाली में कोई नया राशन कार्ड की तो जरूरत ही नहीं रखी हमने। और टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो ईमानदार व्यवस्था आज देश में बनी है, मैं समझता हूं हम सब के लिए बहुत अच्छी बात है कि जो हम सब टैक्स भरते हैं, हम सब जो देश को आगे बढ़ाने के लिए सब यहाँ पे आते हैं, दिन रात समाज में सेवा करने में लगते हैं, हम सबके लिए खुशी की बात है कि बिना 1 रुपए भ्रष्टाचार के आज गरीब को उसका अधिकार मिलता है, उसको अनाज मिलता है। और गरीब की हर योजना में ये टेक्नोलॉजी का माध्यम लेके जो सुधार करने का हमारी प्रणाली रही है, इसका मुझे लगता है पूरे देश ने और अलग अलग देश के हिस्सों ने बड़ी आशीर्वाद भी दिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उनके लीडरशिप में वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम जो लाया गया है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, दैट ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस बहुत ही सराहनीय है। स्पेशली द माइग्रेंट वर्कर्स और कोरोना काल में पीड़ित लोगों को बहुत राहत मिली है। लेकिन महोदया, मेरे पास फेयर प्राइस शॉप ओनर्स द्वारा अनियमितता के किए जाने की शिकायतें आती रहती है। मेरा माननीय मंत्री से यही पूछना है, क्या अन्य सरकारी योजनाओं की तरह इस योजना के तहत भी बेनिफिशियरीज को फेयर प्राइस शॉप से सब्सिडी वाले फूड ग्रेन्स दिए जाने के बजाय डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम से राशन कार्ड को कनेक्ट कर बेनिफिशियरी के बैंक खाते में डायरेक्ट सब्सिडी ट्रांसफर करने की कोई योजना है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके ऊपर भी कई बार विचार हुआ है, कई बार ये सुझाव भी सरकार के समक्ष आया है, इस पे कई बार चर्चा भी हुई है। इसके दोनों पहलू हैं। एक तरफ इसका एक लाभ भी है कि सीधा पैसा खाते में जाए तो ये पूरा अनाज एक एक जगह पहुंचाने का खर्चा वगैरह सरकार के ऊपर नहीं आएगा। लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है कि अगर पैसे बैंक के खाते में गए और जो हमारी गृहिणी है, हमारी घर चलाती है, हमारी माता बहनें हैं, अगर उनको ये पैसा उनके हाथ ना लगा या उनके खाते में भी डाला लेकिन कोई और इस्तेमाल में लग गया और अनाज ना मिला उस घर को, अनाज ना मिला उस बच्चे को, तो वो हमारे सबके लिए एक बहुत गंभीर समस्या होगी। इसको मद्देनजर रखते हुए फिलहाल ऐसा तय हुआ है कि इसको ही आगे चलाया जाए और इसी स्कीम के माध्यम से लोगों तक अनाज पहुंचे। मैं एक और बात कहूंगा, क्योंकि उन्होंने एक विषय रखा कि हमने इसकी लगातार ऑडिट की भी प्रणाली रखी है। अलग अलग तरीके से इसको हम जमीनी स्तर पर कैसे लागू हो रहा है इसका ऑडिट भी करते हैं। और पिछली एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इंडिपेंडेंट पार्टी को जब ऑडिट किया करने का काम दिया तो लगभग 94% बेनिफिशरीज तक ये सीधा पहुंच रहा है, इसका अनुमान उस रिपोर्ट में आया। और उसमें जो जो और चीजें सुझाव के रूप में भी आई, सरकार पूरी तरीके से सुधार के प्रति प्रतिबद्ध है और पूरी तरीके से संकल्पित है। और मेरा मानना है कि ये शायद एक सबसे सफल योजना रहे वन नेशन वन राशन कार्ड की, जिसने देश में लगभग आज 60 करोड़ पोर्टेबिलिटी ट्रांजैक्शन हो चुके हैं। 60 करोड़, तो लगभग 60 करोड़ लोग देश में गांव में लेने के बदले कुछ अनाज अपने और कोई जगह लेते हैं, कुछ अनाज गांव लेते हैं। एक बहुत बड़ी सफलता की निशानी है। Recently, we have got a United States Environmental Protection Agency proving the fact that copper has antimicrobial and antiviral properties. Now, what happens to our life is this. Basically, we need a stamp of approval from foreign agencies to tell us that what we have been practicing since ages or since years is actually the right thing. Recently, the whole world's attention was diverted to a photograph wherein our Prime Minister
Sri Narendra Modi ji was having meal with his mother. And what caught my attention, other than the mother and son bonhomie, was the fact that they were having their food in the copper utensils. And I checked it back with the photograph of 2001 also. 2019 also. During those days also, he was having food in those copper utensils. So what I would like to say is that when it has been almost proved that copper has got antimicrobial and antiviral properties, can we undertake a proposal of converting all railway touch surfaces, the handles, the doorknobs and everything, to something which is laden with copper, so that keeping in mind the safety of the passengers, we can undertake such measures. Number two is, like you have allocated 1,000 crore for redevelopment project in this budget. Whether we can consider anything in this redevelopment package so that we can develop copper to be used in a better way in railway coaches. माननीय सांसद जी का ये निवेदन है कि कॉपर को यूज करने से जो माइक्रोबियल वायरसेस उसका डिसइंटीग्रेशन जल्दी हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये हमारे आयुष पद्धति में भी है, हमारी संस्कृति में भी है और आज साइंस ने इसको प्रूव किया है। रही बात रेलवे में इसका उपयोग की, माननीय सांसद जी का जो सुझाव है कि जितने भी हमारे टच सरफेसेस हैं उन टच सरफेसेस में कॉपर का यूज किया जाए, इसका एक्सपेरिमेंट रेलवे ने किया माननीय अध्यक्ष जी, करीब 300 कोच में किया। जो हैंड रेल्स है, जो 2 कोचेस को कनेक्ट करने वाला वेस्टिब्यूल है, उस सब एरियाज में कॉपर का उपयोग अधिक किया, उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया। केवल एक ही इसमें समस्या है कि कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कॉपर एक बहुत महंगा पदार्थ है और जिस सरफेस पे लगाए वहां से घिस भी जाता है जल्दी, तो शायद मास ट्रांसपोर्टेशन में इसका उपयोग हो, खान पान में, बर्तन में, हर जगह इसका उपयोग जरूर करना चाहिए। दिन देखिए 8 बजे रात्रि 9 बजे सुबह राष्ट्र प्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।